Uttar Pradesh, supported by National Health Mission, Uttar Pradesh, and organized by APAC News Network. This event has been envisaged keeping in mind the realities of today, the challenges of today, when we talk about building that sustainable make that kind of ecosystem where government, in terms of policy making, hospitals who are giving the healthcare to the masses and technology players, they can share their best experiences, challenges, and how those challenges can be overcome by leveraging technology innovation. It's a matter of policy, people, and innovation. If we follow this 3 month cycle, we can transform this healthcare conference, healthcare transformation. And with this, I would like to invite on stage Shri Durga Shankar Mishra, IAS Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, to come on stage, please. He's the special guest for this conference who will be delivering the keynote address in the inaugural. I also welcome Shri Ranjan Kumar, IAS Secretary, Medical Health and Family Welfare Department, Government of Uttar Pradesh, who is the program chair of this healthcare innovation conclave. We welcome both of you, sir. I request Mr. Gopi Krishna Arora, co-founder of APSC News Network, to come on stage and kindly welcome Shri Durga Shankar Mishra, who is the special guest of this conference for the inaugural session on behalf of APSC News Network. A huge round of applause for. We welcome you, sir. We'd like to invite both Durga Shankarji and Ranjan Kumar, sir, to officially inaugurate Healthcare Innovation Conclave Uttar Pradesh by lighting of the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Can we have a huge round of applause for the official inauguration of Healthcare Innovation Conclave? And I request my colleagues to ensure that whoever coming now, okay, they can come inside the hall and registration can happen later. With this, just to give an overview that what we'll be discussing throughout the day, the inaugural session is focusing on Uttar Pradesh way of taking healthcare delivery to the last mile with innovation. It will have the special address by Sri Durga Shankar Mishra, also welcome address by Sri Ranjan Kumar. Then it will be followed by industry presentation and one session on making India a digital health nation, enabling digital healthcare, in which we have representation from ABDM, USAID, and ADBH. Also, it will be followed by a special session only with the representations from AIMS Raipur and Bhopal, AIMS Delhi, and also SGPI Lucknow. And it will be followed by a panel discussion on role of hospitals in advancing healthcare development. That will be a leaders talk, which will see presence of leaders from the hospital ecosystem of UP. With this, I would like to invite Ranjan Kumar, IAS Secretary Medical Health and Family Welfare Department, Government of Uttar Pradesh, to give his welcome address. A huge round of applause for him, please. हमारा presentation में लग जाएगा अच्छा ओके ठीक Thank you. Honorable Chief Secretary, sir,
other esteemed delegates and experts. I really feel honored today to welcome you all in this inaugural brainstorming session in the Healthcare Innovation Conclave organized by APAC News Network. As we all are aware that Uttar Pradesh with population exceeding 235 million has a diverse geoclimatic zones and people with a diverse socio-economic and cultural background. They live here, and this is the fifth largest geographical entity on the planet Earth. So, with this huge population, with people living with diverse background, living in different geoclimatic zones, they have diverse pattern of diseases and consequently that require different health needs. So with this huge challenge, the government of Uttar Pradesh, they have endeavored to make the quality health services to the last mile, particularly to the people with socioeconomic background of lower strata or people living in the rural areas and the remote areas. We can see that western district of the state have preponderance of lifestyle diseases, air pollution related conditions, viral hepatitis B. District of Bareilly, Mirzapur and Lucknow division contribute to majority of malaria cases. District of Eastern and Central UP, especially Basti, Gorakhpur, Devi Patan and Lucknow divisions, they contribute to majority of case load for Japanese encephalitis and acute encephalitis syndrome. So that to cater to diverse health need that require meticulous planning and lot of innovations. So Uttar Pradesh government is on the forefront of the technology and innovation. Not only they have revolutionized the way they reach to the people of the last mile, uh, and also by developing different portal-based monitoring and the collection of data and uh, act upon the quality analytics based on these data, we have definitely made and great impact in the field. So we have very innovative Dastak model. This has started since 2018, where we conduct 3 times in a year a full-fledged multi-department activity. So we involve 13 different departments. They do very focused activity in their domain. And this is also followed by a strengthening of public health facilities. And also we make sure that availability of quality treatment up to the block level and massive door-to-door campaign, IEC campaign followed. And by guidance of our Honorable Chief Minister, this program has been successful in reducing the number of AES cases in year 2023 by 76% and AES deaths by 98% as compared to the year 2017. Also, to bring quality health services to the last mile, uh, uh, by the initiation from our Honorable Prime Minister, the innovative scheme Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So this provide for up to the 5 lakhs reimbursement for the treatment done in any of the private impaneled hospital as well as the government hospitals. And our state is first in operationalization of this scheme. And till now, this is more than 2,000 crore have been disbursed for this scheme. And also, the people who were left out of the list of this eligible socio-economic caste census list, there is a scheme of Mukhyamantri Jan Arogya Abhiyan, the same availability of medical treatment
and this was inaugurated by our Honorable CM on March 1st, 2019, and this extends more than 8.43 lakhs families more. And also, at the same time, as I said earlier, we have started digitizing the record of doctors, and we have linked to different activities like Manav Sampada. This is linked to the UPK Swasth Kendra. And also we have developed DBDMS portal. This helps in smooth delivery of medicines to this facility. This was earlier very difficult task to make sure that the drugs are available at every facility. Now it is 100%. It is available in the last facilities. Another application called Care that used to map and monitor availability and functionality of equipment on these facilities. So we have now at any moment of time, we know which are the instruments is working, which are not. So we do regular monitoring and meetings with all the CMO and CMS with top 10 district, top 10, last 10. So this was uh, a game changer in making sure that all the equipments are working, all the facilities. So we have also started very innovative monitoring and control room called Hope, Health Online Parameter Evaluation. This is first time I think this is in the country where 16 types of camera in different location in the health facility in more than 115 hospitals, big hospitals, we were able to monitor. So there are dedicated people there with prescribed formats, protocols. So whenever they see that the equipments are not there, people are not there, a stretcher is not in place, or the unnecessary crowds are there, so they used to call back to the CMO and CMS. This has improved a lot the working of the health facilities. Also, we are using e-Sanjeevani, the telemedicine facilities, and they are very innovative and very effective the technology and driven digital innovation, which I would like to highlight through this presentation. Where okay, so I think after the inaugural session, I will take time to present this. So this will highlight the few initiatives taken by the UP government, which has been very effective in bringing the health services to the last people, and very important health services like ultrasound and other things. So thank you so much. I welcome again to everyone to this very important healthcare innovation conclave. And I hope the whole session will be very useful for not only for us, for others to take learning and experience from others who are working in their field, and their expert knowledge and their sharing will help us to bring more innovation in our field. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sri Ranjan Kumarji, Secretary Medical Health and Family Welfare, Government of Uttar Pradesh. And as you have said that uh, Government of Uttar Pradesh is leaving no stone unturned when it comes to leveraging technology and innovation to transform public healthcare delivery. You talked about installing of cameras in more than 150 hospitals for monitoring, which is also helps in overall surveillance of what's happening in the hospitals. You talked about how uh, healthcare delivery has been transformed in the state by using the good parts of technology. Thank you for shedding some light. And as you have said that we'll be having a detailed presentation by you after the inaugural session. But we have the most important part of this conference, that is the keynote address by the special guest, Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. He doesn't need any introduction. He has served in various coveted positions in Government of India and also in the state government. Whatever you see today, the urban transformation happening in the country, with smart cities, with urban livelihood, with housing for all. He is the man who has realized Prime Minister's vision when he was the Joint Secretary and Secretary in Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India. So here is the man. A big round of applause for him. Let's hear his vision on transforming healthcare in the state of Uttar Pradesh. We welcome you, sir.
श्री रंजन कुमार जी, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्री सौभिक गोस्वामी जी, आज के इस हेल्थ केयर कॉन्क्लेव, इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने के अपाक के संस्थापक, अपाक के अन्य पदाधिकारीगण, आज के इस एक दिन की कार्यशाला में उपस्थित हमारे तमाम सारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स और अन्य देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माफी मांगूंगा कि आपको 10 बजे की कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, ये कार्यशाला शुरू होनी थी और मेरी वजह से आज 9:30 बजे शुरू हुई और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आधा हॉल भरा है, आधा हॉल खाली है। हो सकता है बाकी लोग 10 बजे पहुंचने वाले हैं। मैंने कल ही सौभिक से कहा कि मुझे आज सुबह 10:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक स्पेशल SLBC होने जा रही है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ही चेयर करेंगे और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे, हमारा लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, सारे बैंकों के जनरल मैनेजर्स होंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और आपको रिपोर्ट भी मालूम होगी नीति आयोग की, इस साल का जो सबसे ज्यादा लैंडिंग अगर पूरे देश में कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने जिस तेजी से अपना CND रेशियो इंप्रूव किया है, बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बड़े मेरे लिए गौरवशाली क्षण होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही SLBC को चेयर किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और वहाँ मेरे लिए पहुँचना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने सौभिक से कहा कि मैं 10:15 पे अपनी गाड़ी में बैठ जाऊंगा, उसके अलावा मेरे पास वक्त नहीं होगा। तो इसके लिए मेरी वजह से जो आप लोगों को कष्ट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि विषय मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा मैं जरूर आना चाहूंगा और पूरे बाकी दिन भर मेरे पास इतना वक्त नहीं था, इतनी सारी व्यस्तताएं थी, इसलिए ही सुबह 9:30 बजे का ही वक्त रखा गया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपाक टीम को कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय हेल्थ केयर इनोवेशन कॉन्क्लेव, आप शब्दों को चुनिए, देखिए, हेल्थ केयर इनोवेशन कॉन्क्लेव, इट इज नॉट ए हेल्थ केयर कॉन्क्लेव, इट्स ए हेल्थ केयर इनोवेशन कॉन्क्लेव। और आज हमारे देश में इनोवेशन की एक लहर आई हुई है। पहले हम इनोवेशन के बारे में बात भी नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि इनोवेशन नहीं होता था, होता था, लेकिन इतना होता था कि वो कहीं किसी के नजर में नहीं आता था। लेकिन आज आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, हेल्थ केयर ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, वहां पे इनोवेशन 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 आज हमारे देश की एक नई तस्वीर बन गई है। आज का जो हमारा यूथ है, युवा है, आज के हमारे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आज के हमारे जो जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, हर जगह इनोवेशन एक नई धारा बन गई है हमारे पूरे चिंतन की। और इनोवेशन लीड्स टू स्टार्टअप्स, कोई नया चीज शुरू करते हैं, इट लीड्स टू स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स लीड्स टू इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप यानी इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप एक नया चीज बन गया और उसको लेकर के आपको जानकर के खुशी होगी, ये आज दुनिया का चौथा बड़ा स्टार्टअप हब हो गया हिंदुस्तान और बहुत जल्दी वो तीसरा होगा, दूसरा होगा। आज हमारे पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 11,000 स्टार्टअप्स हमारे रजिस्टर्ड है और वो अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें हेल्थ केयर भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, 300 से ज्यादा सुनिकॉर्न्स है और बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा माहौल दिया गया है जिस माहौल के तहत आज हिंदुस्तान में स्टार्टअप, इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों के तीनों एक पंक्ति में आगे बढ़े। अभी जब मैं यहाँ बैठा था, मुझसे 2 लोग मिलने आए। एक मुझसे मिलने आए NSP के, नेशनल साइंटिफिक प्रमोटर के क्या समर्थ मरवाहा जी, और दूसरे मुझसे मिले आए सुनील सिंह जी, CEO यूनिलैब। और उन्होंने मुझसे और कोई बात नहीं की, उन्होंने ये बात की कि कैसे वो इनोवेशन के माध्यम से
एक नई हेल्थ केयर की व्यवस्था दे रहे हैं। मुझसे मिलने आई हमारे केजीएमयू के डॉक्टर्स, यहाँ पे 3-3 डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। किस लिए? क्योंकि केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के द्वारा दोनों ने मिल करके एक एसआईवी साइन, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन, सिनर्जाइजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सिनर्जाइजिंग हेल्थ केयर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एसआईवी साइन, जिसको शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य मिला 1 साल पहले। और जब उसका 1 साल पूरा हुआ, उसके बाद दोबारा फिर से जब नया बैच आया, उस नए बैच को भी उसको शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य मिला। देख के इतनी खुशी हुई कि हमारे तमाम सारे एक्सपर्ट्स, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केजीएमयू और आईआईटी कानपुर, ये तीनों मिलकर के ऐसे देश के ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे होनहार बच्चों को चुनते हैं और वो बच्चे इस बात पे काम करते हैं कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई दिशा दे सके, एक नई व्यवस्था दे सके। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज आईआईटी कानपुर में 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बन रहा है, स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बन रहा है। उसको हमारे आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट ने उसको मेजर उसकी फंडिंग वहां से की थी, सब्रवाल इंस्टीट्यूट, और वहां पे आर्टिफिशियल हार्ट बन रहा है। मुझे सौभाग्य मिला, मैं जाकर के सारी की सारी चीजों को देखा, आर्टिफिशियल हार्ट कैसे होता है, कैसे आप हार्ट का काम जो भगवान ने किया है उस काम को हम कैसे आर्टिफिशियली बनाएंगे। इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, कैसे आप उसे पंक्ति करेंगे, कैसे पूरी व्यवस्था को सिनर्जाइज करेंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। और उस पूरे कॉम्प्लिकेटेड वर्क को किस प्रकार से, कैसे, आपने सेठी साहब का, डॉक्टर सेठी का नाम सुना होगा, वो खुद इसको गाइड कर रहे हैं, इतने बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट वो खुद उसको गाइड कर रहे हैं। और कैसे ये सारी चीज मिलकर के हमें एक हार्ट के लिए अल्टरनेटिव हार्ट दे सकते हैं। ये कोर सिंपल टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी ऐसी जो कि मेडिकल फील्ड भी है और टेक्नोलॉजी भी है, दोनों को मिला करके, दोनों को, वहां पे मटेरियल साइंस भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, टेलीकॉमिक्स भी है, सारी की सारी चीजों को एक साथ सिनर्जाइज करके ऐसा कुछ करें कि हम हार्ट के फंक्शन को कर सकें। ये हमारा नया भारत है, ये एक नई सोच का भारत है। और नई सोच का भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, विकसित भारत का लक्ष्य दिया कि 2047 में हम देश को एक विकसित भारत बनाएंगे। और विकसित भारत कैसे बनाएंगे? तब बनाएंगे जब हिंदुस्तान के हर नागरिक को सक्षम बनाएंगे कि वो भी अपना इसमें योगदान दे सके। जब योगदान देगा, तो योगदान देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको शिक्षा तो बहुत आवश्यक है, बगैर शिक्षा के तो योगदान नहीं दे सकता। तो शिक्षा के बारे में तमाम सारे, और अगर आप एजुकेशन के फील्ड को देखें तो बड़े सारे एडुटेक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कैसे एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए। लेकिन साथ ही साथ उसको सेहतमंद भी होना पड़ेगा। तो हेल्थ टेक के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है कि कैसे हम हेल्थ को एफोर्डेबल बना सकते हैं। हर कोई उसको, हेल्थ को, एक तरफ तो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत के माध्यम से लगभग 50 करोड़ लोगों को हेल्थ एक्सेसिबल कर दिया गया। जो एफोर्डेबल नहीं था उनके लिए वो एक्सेसिबल कर दिया, बिकॉज उनको 5 लाख रुपए की सुविधा दी गई और उसको 5 लाख रुपए की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एफोर्डेबल करने का मतलब यह है कि कैसे जन जन तक उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। और यहां पे रोल आया टेलीमेडिसिन का। कैसे हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे केजी में बैठ करके, एसजीपीजीआई में बैठ करके, हमारे बड़े हॉस्पिटल से, राम मनोहलिया हॉस्पिटल में बैठ करके, वो हमारे सुदूर गांव में बैठा हुआ बंदा है, उस बंदे को कैसे वो हेल्थ केयर दे सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन का बड़ा रोल हो गया और ये आज एक बड़ी आम बात हो गई। ये आम बात हो गई है कि इसको केवल टेक्नोलॉजी ने, जो हमारा इनोवेशन, और उस पर भी लगातार काम चल रहा है। जो आपको हेल्थ के बारे में अभी डॉक्टर आदित्य कपूर साहब हैं यहाँ पे, डॉक्टर आदित्य कुमार साहब बात करेंगे। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा जो जो हमारी आईटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिकल हेल्थ के बारे में स्कूल हमारे एसजीपीजीआई में खोल रखा है। तमाम सारे टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई के माध्यम से ऐसे नई नई चीजों के ऊपर काम चल रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज हमने हमारा जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, माननीय कल्याण सिंह
स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर, जो हमारे प्रदेश का जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कैंसर के बारे में, उस इंस्टीट्यूट और आईआईटी कानपुर और एक संस्था है कार्किनोस, इट इज कोर टेक्नोलॉजिस्ट, सारे के सारे उसमें सारे टेक्नोलॉजी के लोग हैं। और मेरी उस पूरी टीम से मुलाकात है जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तमाम सारे एक्सपर्ट, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। उनके बीच में एक एमयू साइन किया जाता है, कार्किनोस हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट जो कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट है और आईआईटी कानपुर के बीच एक एमयू साइन किया जाता है। और बहुत जल्दी, मैं डेट अभी नहीं बताऊंगा, डेट अनाउंस हो जाएगा, बहुत जल्दी उसका पहला चरण शुरू होने जा रहा है। और जब शुरू होगा तो आप केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कैंसर एक इतना भयावह रोग है जिसके बारे में एक सिहरन हो जाती है, जिस किसी परिवार में अगर कैंसर आ जाता है लोग सोचते परिवार समाप्त हो गया, कैसे इसको हम अफोर्डेबल बनाएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा विकसित भारत का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया है कि इसको पहले प्रदेश को हम विकसित उत्तर प्रदेश बना लेंगे। और जिसका एक नजारा आपने अभी देखा 2 दिन पहले, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स, जो हमारे तमाम सारी इंडस्ट्री है उसको ग्राउंड किया। और ये तो शुरुआत है, इसके बाद पता नहीं कितना भी आगे चलते जाएंगे, क्योंकि हमारी तो 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एमओयू साइन हो रखे हैं। उसमें आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, जिसको न्यू एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, चाहे रोबोटिक्स हो, रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल हमारे मेडिकल हेल्थ केयर के ऊपर है। आप तमाम सारी सर्जरी रोबोटिक्स के माध्यम से होती है और बहुत प्रिसीजन सर्जरी होती है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का वहां पे एंटर किया, जहां पे आप सोचिए कि जहां पे बहुत सारा ब्लड, काफी सारा ब्लड वहां निकलता था, उस ब्लड की जगह पे आज मिलीलीटर्स में ब्लड वहां से यूज करता है। प्रिसीजन सर्जरी यूजिंग द रोबोटिक्स, जहां पे आज नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो जीन टेक्नोलॉजी, आज जीनोम के बारे में इतना सारा कुछ काम हो रहा है। आज हमारा जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो एवी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी नई नई जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, अगर मैं बात करना चालू करूं तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आज सिंपल सी चीजें, अगर आपको रेटिनोपैथी करनी है, अगर कोई आपके आंख के बारे में कोई तकलीफ है, तो पहले तो सारी की सारी चीजें, हमारा जो इसमें जो हेल्थ केयर होता है, हेल्थ केयर में क्या होता है, पहला होता है प्रोमोटिव हेल्थ केयर, कैसे हेल्थ प्रमोट करते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, ये सब सारी की सारी चीजें। प्रिवेंटिव, कैसे इन तमाम सारी बीमारियों को हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यूरेटिव में डायग्नोसिस होता है और डायग्नोसिस के बाद उसका क्योर करते हैं। और उसके बाद जो रिहेबिलिटेटिव, हर जगह ये हमारे हर किस्म के हेल्थ केयर में सब जगह टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको डायग्नोसिस करना है तो कैसे जो है नॉन इंट्रूसिव डायग्नोसिस करें, आपका ब्लड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से इतने सारे मिलियंस ऑफ इटरेशंस करके आप देख सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको फला बीमारी हो रखी है। और दैट विल बी मच मोर एक्यूरेट देन द आज की डेट में जो इन्वेसिव या हमारा इंट्रूसिव जो हमारे डायग्नोसिस थी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट निकल करके आ जाए। तो जिस प्रकार से एक नई टेक्नोलॉजी में से डायग्नोसिस है, रिहेबिलिटेटिव, बहुत सारी चीजें, वेरिएबल, अब देखिए मैंने घड़ी पहना है, मैं जानना चाहूँ कि मेरा क्या हार्ट बीट रेट चल रहा है, हमारे हार्ट की क्या पोजीशन चल रही है, हम कितना हम वॉक कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें, सारी मॉनिटरिंग मेरी घड़ी के माध्यम से हो सकता है। और से तमाम सारे वेरिएबल, ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बन करके आ रहे हैं जो कि आपको एक बेहतर हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। ओके, अल्टीमेटली इफ यू आर हेल्दी देन यू कैन कंट्रीब्यूट योर बेस्ट। जो विकसित भारत है, विकसित भारत के लिए एक सेहतमंद भारत चाहिए कि हर कोई को सेहत हो, पौष्टिक आहार भी हो, उसका जो गुड वे ऑफ लाइफ भी हो, आपको समय से सोए, समय से सारे के सारे काम करें, बहुत सारी चीजें, और वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा जो इनोवेशन है, आज इनोवेशन के माध्यम से जो इतनी सारी चीजें पूरे हेल्थ सिस्टम में की जा रही है, और सबसे बड़ा चीज की बहुत उत्साह है इसके बारे में। मैं जहां कहीं भी जिस किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, जहां भी मैं इसके बारे में जिस किसी फोरम पे डिस्कस करता हूं, लोगों से मुझे इस बात की सुन करके, देख करके बड़ी खुशी होती है कि लोग पूरे उत्साहित हैं और पूरे सोच रहे हैं कि इसको लेकर के दे वांट टू मेक ए न्यू बिजनेस लाइन, एक नया अपनी जो है अब पूरी जीविका का एक नया साधन बनाना चाहते हैं। पहले लोग इस प्रकार के जो है, क्योंकि इनोवेशन का हमारे यहाँ पे कोई किसी किस्म का एटमॉस्फेयर नहीं था, ऐसे हमारा इकोसिस्टम नहीं था।
आज इतना खूबसूरत इकोसिस्टम बना हुआ है कि जिसमें जब मैं आईआईटी कानपुर जाता हूँ, मैं खुद खुद वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ का मैं एलुमनाई हूँ। मैं जब कभी आईआईटी कानपुर जाता हूँ, हर बार जाकर के मुझे गर्व महसूस होता है। बच्चों को देख करके कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे बीच में कॉम्पिटिशन होता था, कौन लोग अमेरिका चले गए, कौन से लोग कहाँ चले गए। ज़्यादातर लोग विदेश जाने के लिए पढ़ते थे। पढ़ते थे हमारे देश के खर्च पे, पढ़ते थे हमारे देश के टैक्स पेयर्स के खर्च पे। लेकिन बात करते थे अमेरिका जाने का और अमेरिका में जाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे, जो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रयोग की जाती थी। ऐसी चीज़ें बनाते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ बच्चों को, वहाँ पे आईआईटी कानपुर के बच्चों को, वो सारे के सारे ऐसे नए-नए इनोवेशंस कैसे हम लाइफ़स्टाइल में कैसे जो आपने ब कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ हम लोग रख सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, क्या करें कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाए, क्या करें कि हमारी ईज़ ऑफ लिविंग हो जाए, क्या करें कि हमारा जो बिज़नेस आसान हो जाए। इन सारी चीज़ों पे इतना सारा किस्म के काम कर रहे हैं, जो कि देख कर के गर्व महसूस होता है। तो आज की जो आपने जो विषय चुना है, हेल्थ केयर इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये बहुत ही पर्टिनेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं समझता हूँ कि इतने सारे विशेषज्ञ जो इस हॉल में मौजूद हैं और बहुत सारे विशेषज्ञ आने वाले हैं। क्योंकि जो मैंने कहा कि आपका कॉन्क्लेव तो 10 बजे शुरू होने जा रहा था और 10 बजे की जगह मैंने 9:30 बजे ही मेरी वजह से शुरू हो गया। तो आपको आगे आने वाले 5-6 घंटे में जो तमाम किस्म के डिस्कशन होंगे, बहुत सारी नई बातें निकलेंगी। बहुत सारे नई चीज़ें, क्योंकि हमारे इनोवेशन में क्या होता है, इनोवेशन जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं, हमें नई एक और आइडिया पैदा होता है। देयर इज़ नथिंग लाइक अल्टीमेट कि आपने ये बनाया और ये सब समाप्त हो गया। हर चीज़ के ऊपर एक फर्दर फर्दर अहेड आप उसके ऊपर जो एक और नई चीज़ें कर सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी का लेयर दे करके उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें प्रिसिजन चाहिए। हमें क्या चाहिए? अफोर्डेबिलिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? इन्वर्सिबिलिटी चाहिए। ठीक, जिससे कि हर कोई को, आज आप सोचिए कि जो हमारा जो पहले जो हमारे जो हेल्थ केयर के जो सबसे छोटी यूनिट थी, आज उसका नाम जानते हैं क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। माने हमें आयुष्मान रहने के लिए आरोग्य मंदिर। आज हमारे वहाँ पे न केवल एलोपैथिक हेल्थ केयर, बल्कि उसके एलोपैथिक, नेचुरोपैथी और जो हमारा आयुर्वेदिक और हमारी यौगिक लाइफ है, इन सारी चीज़ों का सम्मिश्रण मिलकर के काम हो रहा है। और मुझे ये भी जानकारी है कि आज इसके ऊपर, चाहे वो आयुष का सिस्टम है, आयुष के सिस्टम में एक बहुत बड़ा सेंटर बन करके तैयार हो रहा है गुजरात में। मैं गुजरात के जामनगर शहर में वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा सेंटर बनकर के तैयार हो रहा है। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो हमारी जो जो रियल हमारे देश की ताकत है आयुष के माध्यम से, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने ऐसी सारी चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में निकाली थी, उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके और बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आएँगी, जो आने वाले समय में आपको, चाहे वो प्रिवेंटिव हेल्थ हो, चाहे प्रोमोटिव हेल्थ हो, चाहे क्यूरेटिव हेल्थ हो, चाहे आपका रिहैबिलिटेटिव हेल्थ हो, हर चीज़ के बारे में मदद करेगी। तो मैं आज के इस वर्कशॉप के लिए शौविक गोस्वामी जी और आपके जो तमाम सारे साथी जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे उत्तर प्रदेश को चुना इस काम के लिए, जहाँ उत्तर प्रदेश आज तैयार है, देश में एक नई स्ट्राइड के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी देश को हमें पूरे ग्रोथ इंजन बनाने के लिए, तो ग्रोथ इंजन न केवल इंडस्ट्री में, बल्कि ग्रोथ इंजन हर चीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज़ में हम उसको ग्रोथ इंजन होंगे। इसको बनाने के लिए तो ये आपका जो आज की जो कार्यशाला होगी, हमारे लिए बहुत मददगार होगी। अपनी तरफ से मैं आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। एक अच्छा, समृद्ध आपका डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद जो चीज़ निकल कर के आए, मैं चाहता हूँ कि रंजन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मेरी भी जानकारी में लाई जाए, जिसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे यूपी में ले सकते हैं, उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। Thank you so much, Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. Can we have a huge round of applause for him? And sir, taking cue from what you have said, that emerging technology, health tech, just to inform you that the by 2025, India's health tech market is going to reach $25 billion market, sir. We are going to present a special moment to We'll do a short break. We'll come back with the inaugural part 2.
Hi, welcome back to the part two of the inaugural session of Healthcare Innovation Conclave. We have with us Sri Ranjan Kumar, Secretary, Medical Health and Family Welfare Department, Government of Uttar Pradesh. He'll be continuing with this presentation. Let me also take this opportunity to invite Dr. Pankaj Jain, IAS Director, Health Services MP, and Managing Director, MP Public Health Services Corporation, to come on stage, please. Can we have Dr. Pankaj Jain on stage, please? I just saw him. Maybe our colleague can help him to get inside the hall. Also, I would like to invite Vikram Pagaria, Joint Director, National Health Authority, to come on stage, please. Mr. Vikram Pagaria. Neha, can you kindly see where the speakers are? And I was also been told that Major General Professor Atul Kotwal, SMVSM, Executive Director, National Health System Resource Center, if he can also join us on the stage, please. Sir, please come. With this, I will hand over the session to Shri Ranjan Kumar, Secretary Health, Government of Uttar Pradesh, who is also the program chair of this conference, to carry on with this presentation. Over to you, sir. Can we have Dr. Pankaj Jain and Mr. Vikram Pagari on stage, please? Hello, hello, hello. Sir. Uh, I have started with the basic background of our state, that people living in different geoclimatic zones, and they have different socioeconomic and cultural background. So that brings different pattern of diseases in different part of our states, and to meet the medical needs that require a lot of innovation and planning. So UP government is on the forefront of technology and innovation, and we are working simultaneously on many fronts, like developing good portal, feeding real-time data, and using good analytics to bring action on the field based on. So daily, on the daily basis in my mobile, I get update about communicable diseases, the basic symptoms available in different part of our states, and we immediately send team there to take actions for preventive as well as cure. And also the different problem faced earlier in the public health facilities. We have done lot more things to strengthen those public health facilities, not only in bringing good infrastructure, new thinking, new model of making quality health services very close to the people. Like as Chief Secretary sir told, that the Arogya Mandir, earlier that was called Health and Wellness Center, that is based in 5,000 population. So basically, in every village, you have now a Arogya Mandir, where you have more than 16 diagnosis facilities, and also more than uh, uh, 70 drugs. So we have complete facility, and also at the same time in the health and wellness center we provide a teleconsultation facility. So I have visited many, and you see the vibration there. People are there. At least where I visited in Barabanki, in Badayu, more than 10, 15 people were there, and they were in queue for their turn to get to the teleconsultation. So I will uh, uh, go through the
So, the way we worked, so I will go through these tools for promoting ease of healthy living through good governance and use of technology. So, good governance include putting uh, good quality doctors where required, and technology for better monitoring and making sure that people are there. So, see the in area of technology, we have implemented attendance management system to improve service availability of Aisman Bharat Health and Wellness Center. I will go in detail also. E-rupee watches for increasing access to ultrasound services during pregnancy. This was unthinkable of earlier. Every the pregnancy cases now have regular checkup as anyone with a good background of socioeconomic, the frequency with which they visit ultrasound center. Now everyone from any background, from any rural area, now they can visit regular the ultrasound. They can avail ultrasound services. Uh, a scan and share module to minimize waiting times. And regarding people, we have a innovative way of introducing direct recruitment of specialists. So that is on the basis of reverse bidding. So in Sonbhadra, in many places, we are even paying more than 5 lakh per month for the people who uh, intend to work in very remote areas. Creation of a specialist cadre for regular doctors like L2. Earlier, we used to take people only in medical officers rank. Now we directly recruit specialist cadre doctors. And the second is creating localized training ecosystem to ensure timely availability of community health offices. This is very innovative and very rigorous and intense training program with very useful content, and we are making sure. So whenever you meet these community health center officers who are available at 5,000 population, you will not able to differentiate between a doctor and CHO. So he is having minimum good knowledge of diagnosis and the drugs. And third is delivering a specialist services in Aiswan Bhava. So this campaign is very innovative in conduct a Swasth Mela. See, to reach to the people through, as I told, Dastak, which we do 3 times in a year, where from the 13 department people do focused activity. So they go door to door, they do door to door campaign, and they immediately they do follow up and make sure that the prevention as well as cure is done. Similarly, in the next one, you have Swasthya PHC level at the sub-center level, where we are introducing the higher up doctors, specialist doctors, to see their referrals. And also, this has created the people who are like they are not able to convey their things, so they easily come to the Swasth Mela. So we are able to identify those, and we are treating them. And this is continuing medical education. This is very innovative. So more than in 12 subjects, very high specialist subjects, we are imparting training, regular training programs to the medical officers. So in this, the problem of statement, obviously absenteeism of CHOs, even to the other paramedicals and other doctors, is a big problem for the public health facilities. So we have introduced the technology and innovation. So this has now outcome. You can see that 88% CHP are reaching regular. So whenever you visit, you see these people are there, very regular, on time, and uh, even see the teleconsultation services. Can you imagine a person from the village? So I was
sitting in one of the household in the rural area in Badaयूं. So one of the member was missing. So I asked where she, they just वो दवा लाने गए हैं बगल की दुकान से. मैंने कहा कौन सा दुकान? I understood then it was wellness center. So now they treat that in very nearby available these high level consultations and drugs. So there is a concept of hub. So when I visited, you have a hub of doctors. So if that CHO is unaware of things, that the symptoms and all, so you can immediately connect with the good doctors. Also, at the PPP mode, in the investment summit, we have proposal of more than 35 crores from a company who is willing to install these teleconsultation kiosks in villages and with a hub of very high caliber doctors. So that will, I think, bring the kind of where you have very good audio and you can hear very, very clean voices and you can easily advise what is the cure. So this is very good initiative. And then e-rupee voucher. This is game changer. So now we give a token to the mobile, so they can use our this financial token to pay to the ultrasound visit to the private. So this is totally reimbursed by us. So now every pregnant women they afford to avail all the ultrasound services. So we now have we are able to list the high risk pregnancy based on these diagnosis, and we can treat in time. So we are saving life, lot of lives now. And this is a scan and share model. See the view. So if you use these scan and share model, so see you are alone there. So usually you reach to the counter and avail all the services. We are working in this area in a very focused manner. So government of India through national this NHA, they have come up with a very innovative new concept of microsite. So basically, microsite is a basically landscape of different health facility, including the smaller one, less than 50 beds, and including individual doctors, clinics, diagnostic center, and all. So what we are doing, so we have employed interfacing agency and development partners. So they have done this piloting in Mumbai and in Gujarat. They were very successful in bringing them into ABPM, this Ayushman Bharat Digital Mission platform. Basically, this is a kind of internet network where when you get a IP address or when you get a connection, so you are now have access to billions, trillions things all over the world. Similarly, in Ayushman Bharat Digital Mission, once you get ABA ID or any doctor getting HPR, the professional registry, name in it, professional registry or any health facility getting HFR, so they are immediately on that platform. So they can avail the high quality applications, services. Easily they can know okay, who are the best doctors in this field, and doctors they can improve their efficiency because they include financial as well as other non-medical services. So immediately, so they can easily improve the discharge and for the insurance also, that facility can have a good this MOU with insurance company and also that bring totally in totality complete digital solution of healthcare. So we have just started. So in the future, we can imagine that on the mobile, on the dashboard, you have different symptoms. Just click fewer. So immediately there is a call from a very high quality doctors. Ki, Ranjan, I know because
once you give the consent, your your all the earlier the history of your goes to that doctor, and immediately he will say, "Okay, nothing, this is just a fever, just take paracetamol or nothing." So can you imagine the confidence level that person, they will immediately take paracetamol, go to the hospital, and based on earlier history, he can say, "Oh, it is again reoccurrence of that thing. So be careful, take rest, and go to the diagnostic center, have again blood test." So, future, this is the future. So even also we are thinking about like HMIS model, where outpatient model in that, where you just scan the QR code, get appointment in any of the doctor, any of the facility all over the country. And at 12, suppose in the evening 6 in Chennai, so I can immediately organize myself to go there, go to the waiting room at 5:45, and you visit the doctor at 6. So that will bring zero queue in all the hospital health facilities. And so, so that efficiency, the more number of patients they can cater. So this is win-win cases, case for everyone. The private facility for government, they are working on analytics also. So they will create anonymous kind of in ABDM. This is complete anonymous. So nobody can see your thing. You are suffering from what? Nobody can see except you. So he is the main boss, but they are working on anonymous data so that they can do analytics on that, so that they can create new policy instrument, new strategy, and new planning and new innovation in policy in working implementation also. Indian is a very big initiative, and we are working hard to. So in India, NHA, they have declared that they will go for the 100 microsite in all over the. So immediately we took that opportunity, as he said, our chief secretary, the UP is new place where you can think of growth, you can think of any innovation immediately. So we grab that opportunity because the mall is that immediately we went for 35 microsite in one state out of 100. So they have implemented, I don't think more than 8, 9. So we have immediately launched 35 microsites. So now in coming weeks or so, we will start giving results, the first cases, second cases. So adopting the private facility to the MDM. This is big initiative. So if this is successful, we will go for all the 75 districts. So can you imagine in coming years, we will have all the health facilities. So even in clinical establishment act, we have provided for they have to display their details outside their hospitals. So that include the name of the professionals, the doctors. So HPR, what that did, this HPR facility, this has a process that MCI verify a doctor, and then our facility verify that he is working there. Can you believe once you have HPR, so you are dead sure that this person is genuine and is really available in that facility. So there are complaints ki they say that this doctor is available everywhere. So you go there, you meet ward boy, another doctor who is actually is not there. So this ABDM thing will bring a complete change of things in this field. Yeah. So see now we have created a specialist cadre. So I think almost more than 3,000 a specialist doctor we can recruit. So till now we have recruited 1,209 specialists in regular positions.
and apart from 198 contractual associates. This is very interesting. So that now we are utilizing KGV expertise. So this program is regular. So annual intake capacity 60. We will find well-trained nurses. So this government facility now have very quality uh, service providers and personals available everywhere. This is unique. I don't think the uh, these kind of regular, rigorous training programs is happening. So this, as I told, in Ayushman Bhava campaign, you have different Mela where people are very, very comfortable in coming there. So they find sometimes very, very complex symptoms and they are cured. And these 826 students who are doing FPMS, so they're very useful in giving health services. This so the result you can see that more than 1.28 lakhs, this 1257 in Mela in 1257 lakh registered minor surgery be by way of follow-up. We have done 6,000 and major great achievement, great success. See, this continuing medical education, so more than 12 subjects. Our director administration, Raja Ganapati, he is very passionate and he conducts regular training programs with very high quality, very disciplined. And really, I found this no less than any Masuri training or any or any, very rigorous. And this is very innovative. So, so now people are knowing. So when I was district magistrate, I found many times they are unaware. The doctors in the government facility, they are unaware of these things. But now they all know because of this regular package of a specialty continuum. So this is very good innovation. So innovation not only comes from digitizing the records and all. You have to look into the e-governance, that e-part in governance. So you have to innovate in governance also, and then bringing technology to make it e-governance so that fast, efficient, and accessible, inclusive, and sustainable. So we are working on every facet of things, and regularly we are in talk with all like special security, our CE and all. We talk about how to innovate. So definitely, when they came up with this idea of conducting this conclave, immediately I said yes. Because anything you get from others, we can implement. So I'm very looking forward today that to hear from a specialist, the people who are passionate in this field for the innovation to bring back something to implement. Thank you so much for giving me the opportunity to tell you what. Thank you so much indeed, Sri Ranjan Kumar, Secretary Health, Government of Uttar Pradesh, and detailed presentation which has shown us the kind of work being done in the state. And also, it's quite heartening for me personally. I'm always vocal for leveraging technology innovation. It actually encompassed how technology innovation is being leveraged in the state of Uttar Pradesh. You also emphasize on the E part of government that is playing a major role when it comes to imparting health and delivery to the masses at large. Thank you so much. With this, we had a Uttar Pradesh perspective. Let's have a perspective from another Pradesh, that is Madhya Pradesh. We have with us Dr. Pankaj Jain, Director Health Services, MP and Managing Director, MP Public Health Services Corporation. Over to you, sir. You can come here also. Oh, नमस्कार सर। पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ इनवाइट सर, विक्रम सर, शौविक जी और हमारे बहुत सारे साथी मेडिकल फील्ड से हैं और मेडिकल फील्ड को सपोर्ट करने वाले काफ़ी इनोवेशन की फील्ड से। मैं सर आपने जैसा यूपी के बारे में बताया सर और अब सर अक्रॉस द स्टेट्स ऑलमोस्ट
under the guidance of our Prime Minister and our